हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू विज़न एकेडमी। आज हम बात करने वाले हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से एक एग्ज़ाम हुआ था जूनियर सिस्टम इंजीनियर का, एडवर्टीज़मेंट नंबर 11 मॉर्निंग सेशन का। ये क्वेश्चंस हैं इनकी की आपके सामने रिवील करने वाला हूँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय ना लेते हुए। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ पर्यायवाची शब्द बताना है सूरज का, तो सूरज का पर्यायवाची सूर्य होगा। नेक्स्ट, क्रय का विलोम शब्द विक्रय। नेक्स्ट, ईद का चाँद होना, बहुत देर बाद दिखाई देना। टोपियों शब्द का सही एक वचन टोपी बनेगा। भुजा शब्द का सही बहुवचन भुजाएं आएगा। नेक्स्ट इज डैश इज अ सिनोनिम फॉर प्लेट एबल, एग्रीएबल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज एंटेनम फॉर डेलिकेट, डेलिकेट का जो एंटेनम होता है वो कॉर से होता है। नेक्स्ट इज शेडिंग क्रोकोडाइल टीयर्स, शेडिंग क्रोकोडाइल टीयर्स मगरमच्छ के आंसू बहाना, तो इसके जो फिलअप में आएगा इनसिंसियर डिसिपल ऑफ इमोशंस, दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज द मिनिस्टर मेट द मैनेजर एंड ही रिकॉग्नाइज हिम, तो रिकॉग्नाइज की जगह जो है वो रिकॉग्नाइज्ड आएगा। नेक्स्ट इज that you are drunk while driving aggregates your offenses, so offenses आएगा इसके अंदर। नेक्स्ट इज नालंदा यूनिवर्सिटी, बहुत ही आसान क्वेश्चन, बिहार के अंदर है इसका। नेक्स्ट इज साउथ एशियन गेम्स 2019 was held in ड्यूरिंग 1 दिसंबर टू 10 दिसंबर, जो साउथ एशियन गेम्स हुए थे ये नेपाल के अंदर कंडक्ट कराए गए थे। नेक्स्ट इज इनमें से जो है किस राज्य को, कौन सा जो राज्य है वो अधिकतम मैग्नीज का उत्पादन करता है, तो आंसर इज ओडिशा। ओडिशा देखिए बहुत सारे मिनरल्स का उत्पादन करता है। नेक्स्ट इज हु वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका इन द रिसेंट 2019 इलेक्शंस के दौरान श्रीलंका के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम में। सो आंसर इज गोतब्या राजपक्षे। नेक्स्ट इज विच गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द ओड इवन, बहुत ही आसान क्वेश्चन, यदि आप नॉर्थ साइड में रहते हैं तो आंसर इज दिल्ली, आपको पता होगा ये क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट इज किस सरकार के खतरनाक धुन, ये क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट इज आफ्टर रिवोल्ट ऑफ 1857, वेरी सिंपल क्वेश्चन, आंसर इज पंजाब। नेक्स्ट इज जो हर्षवर्धन है इन्होंने थानेसर से पहले एक कैपिटल बनाई थी अपनी राजधानी, इसका नाम है कन्नौज, बहुत आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट इज जननायक पार्टी ने कितनी सीट जीती हैं, 10 सीट्स जीती हैं, बहुत आसान क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट इज जो हमारे श्री योगेश्वर दत्त जी हैं एंड संदीप सिंह जी, इन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की है हरियाणा के अंदर, इसका नाम है बीजेपी पार्टी, बहुत ही अच्छे लीडर हैं इसके अंदर श्री नरेंद्र मोदी जी, जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी हैं अभी में। नेक्स्ट इज पहलवान श्री, this question we have done. Next is in 2019 the theme state for Surajkund Mela, जी आंसर इज महाराष्ट्र। नेक्स्ट इज विच सॉफ्टवेयर इज यूज्ड बाय हरियाणा पुलिस टू मेक फोरेंसिक रिपोर्ट्स टेम्पर प्रूफ, ताकि लीक ना हो सके, फोरेंसिक जो रिपोर्ट्स हैं ये लीक ना हो सके, तो इसके लिए सॉफ्टवेयर तैयार किया गया हरियाणा पुलिस की तरफ से जिसका नाम है तरेका। नेक्स्ट इज दुबई में आयोजित पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में हरियाणा के किस भाला फेंकने वाले ने स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल जीता है, आंसर इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, यदि आपने जीए पढ़ रखी है तो संदीप चौधरी। नेक्स्ट इज हु वाज द हरियाणाज फर्स्ट स्टेट ऑफिशियल पोएट, वेरी सिंपल, दिस वन इज श्री उपाध्याय भानुहंस। नेक्स्ट इज बाणभट्ट, अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, हर्ष चरित्र द फर्स्ट हिस्टोरिकल पोएटिक वर्क इन संस्कृत लैंग्वेज, आर्यभट्ट जो है वो लिखी थी हर्ष चरित्र, दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज संस्कृत भाषा, दिस वी हैव डन। नेक्स्ट इज Altaf Hussain Hali, the great Urdu scholar, was born in which district of Haryana, answer is Panipat, very easy. नेक्स्ट इज कालेसर नेशनल पार्क कहाँ पे, यमुनानगर के अंदर है हरियाणा के अंदर, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, डिस्ट्रिक्ट इज यमुनानगर। नेक्स्ट इज हरियाणा इज बॉर्डर्ड बाय पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश टू द नॉर्थ, वेरी इजी क्वेश्चन अगेन। शिवालिक हिल्स लाइज इन टू द डैश ऑफ हरियाणा, वेरी इजी, नॉर्थ ईस्ट। नेक्स्ट इज शिवालिक पहाड़ियाँ नॉर्थ ईस्ट में पड़ती हैं हरियाणा के। नेक्स्ट इज द डिस्ट्रिक्ट्स, वेरी इजी क्वेश्चन, 22 डिस्ट्रिक्ट्स हैं हरियाणा के अंदर। सेम यही क्वेश्चन जो है वो क्लर्क के जो एग्ज़ाम हुआ था हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का, उसमें भी आया था, सेम यही क्वेश्चन रिपीट में है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट इज ग्राम पंचायत इज़ द फर्स्ट टीयर ऑफ पंचायती राज इन हरियाणा, वेरी इजी क्वेश्चन अगेन, पहला टीयर होता है पंचायती राज का।
And next is Haryana state was divided into how many clusters for solid waste management in April 2019? It is 14 क्लस्टर्स के अंदर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को जो है वो डिवाइड किया गया है. नेक्स्ट इज डैश इज द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ वेरी इजी क्वेश्चन. अम्बाला जो है वो लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है स्टेट साइंटिफिक एपरेटसिस का. नेक्स्ट इज इन हरियाणा हु वाज ऑनर्ड एज द फर्स्ट स्टेट पोएट इन उर्दू के अंदर फर्स्ट जो राज्य कवि के रूप में सम्मानित किया गया है उर्दू के. सो आंसर इज अनूप चंद आफ्ताब. नेक्स्ट इज हु इज़ द लीडर ऑफ अपोजिशन इन हरियाणा लेजिस्लेटिव. विधानसभा के अंदर 1 जनवरी जो डेट बताई गई है इसके अंदर दौरान आपसे पूछा गया था कि 1 जनवरी 2020 के अंदर तो श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी इज़ द राइट आंसर जो कि विपक्ष में थे. नेक्स्ट इज मुर्रा. वेरी इजी क्वेश्चन. मुर्रा जो है वो बफेलो का एक ब्रीड है. बफेलो भैंस जिसे हम कहते हैं. नेक्स्ट इज डैश एन डैश ट्रांसलेट्स assembly language to into machine code. Answer is assembler. Next is a page fault is dash. Answer is B, that is an access to page not currently in memory. जो अभी मेमोरी में नहीं होता है उस तक पहुंचने का एक एक्सेस होता है बेसिकली पेज फॉल्ट जिसे हम कहते हैं. नेक्स्ट इज इस क्वेश्चन को आप ऐसे कर सकते थे यदि आपने इसी तरीके से किया होगा तो. जैसे कि मैं आपको बताता हूँ. देखिए स्कैनर. सो स्कैनर बेसिकली क्या करता है. स्कैनर बेसिकली यूज्ड टू कैप्चर इमेजेस एंड कन्वर्ट देम इनटू डिजिटल फॉर्मेट्स. नेक्स्ट सो इसका आंसर जो होगा वो ए होगा. एंड अगेन थर्ड का आप ए से मैच करेंगे एंड देन फर्स्ट का आप जो है वो आप यूज टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ कर्सर. सो आप इस तरीके से डिसाइड किया होगा आपने इस क्वेश्चन का आंसर. नेक्स्ट इज द डैश मॉनिटर्स यूजर activity on the internet and transmits that information in the background to someone else. Answer is spyware. Very easy question. Next is saw, trowel, hammer, screwdriver. आंसर इसका होगा और बताना था. असंगत शब्द चुनिए तो करनी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट इज पेटल के लिए फ्लावर है तो किसके लिए क्या होगा. तो आंसर इज टायर्स आर देयर फॉर बाइसिकल. नेक्स्ट इज साइकिल के लिए टायर ही होता है. नेक्स्ट इज व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज. वेरी इजी क्वेश्चन. अगर आपको थोड़ा सा भी मैथ आता है तो आंसर आपने 606 ही लगाया होगा. नेक्स्ट इज इफ वॉच इज कोडेड एज दिस देन टाइम इज कोडेड एज. तो आंसर इज सी WMPI. दिस इज अगेन वेरी इजी क्वेश्चन रीजनिंग का क्वेश्चन. नेक्स्ट इज सिंप्लीफाई करना था मैथमेटिकल कैलकुलेशंस का क्वेश्चन. आंसर वुड बी 2. नेक्स्ट इज cycle is bought for ₹900 and sold for 1260. Find the gain percent. Again very easy question. Mathematics. 40 is the right answer. Next is population of town increased from this to this in a decade. What is the increase in percentage? Answer is 40. Next is this question has an answer of B, that is 2000. Next is ABCD ने proportion of 5:4:3 ना. सो इसका आंसर 2000 होगा. नेक्स्ट इज कॉन्केव मिरर्स आर यूज्ड इन. मेकअप मिरर्स के अंदर कॉन्केव मिरर्स को यूज़ किया जाता है. श्रृंगार दर्पण जिन्हें हम कहते हैं. नेक्स्ट इज केमिकल सिंबल फॉर द मेटल टिन इज SN. नेक्स्ट इज हाउ मेनी बोन्स आर देयर. वेरी इजी क्वेश्चन. 206. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू DES स्टैंडर्ड्स in what form is the data encryption. Okay, so next question is 51st question is DES. DES stands for data encryption and what was the full form of this? Data encryption standards. Next question is data encryption standards मानकों के अनुसार encryption के लिए डेटा एन्क्रिप्शन मानक के रूप में किस में उपयोग किया जाता है. आंसर इज गुप्त कुंजी क्रिप्टोग्राफी. This is the right answer. Secret key cryptography is the right answer. Next is let's consider X is sending a message to Y and during this process X and Y are use different keys for data encryption and decryption. What type of encryption decryption techniques are they using? So for this question answer is public key encryption and decryption techniques they are using. Next is what is the most commonly used public key cryptography algorithm. Answer is VRSA. Next is MD5 message digest algorithm. 5 is an cryptographic hash function with an output value of dash bit hash value. Answer is 1 to 8.
नेक्स्ट इज इन व्हाट फंडामेंटल वेज इज द नेटवर्क परफॉर्मेंस मेजर्ड. सो जो नेटवर्क की परफॉर्मेंस होती है इट इज़ मेजर्ड बाय बैंडविड्थ एंड लेटेंसी. अगेन वेरी इजी क्वेश्चन. नेक्स्ट इज आर बैंडविड्थ एंड थ्रॉट आउटपुट डिफरेंट टर्म्स जस्टिफाई. सो आपको इस क्वेश्चन के अंदर जस्ट ये बताना था कि बैंडविड्थ और जो थ्रू आउटपुट होती है वो अलग अलग शब्द हैं या नहीं है. सो यस, नो बोथ. तो इसका जो आंसर होगा नो होगा. नो बोथ आर डिफरेंट टर्म्स एज बैंडविड्थ एज अ मेजर ऑफ फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ, frequency bands width and the throughput refers to the measured performance of the system. So answer is for that is C. Next is if the term total latency is defined as the total of propagation, transmit and queue, then how is propagation and transmit computed? So for that question answer would be B, that is propagation is equal to distance over speed of time and transmit is equal to size over bandwidth. So for that answer is B. Next is यदि कुल will this question we have done. Next is the throughput relationship is given by following expression, that is throughput is equal to transfer size over transfer time. And how is the transfer time computed? So answer for that question is D, that is transfer time is equal to RTT plus 1 over bandwidth into transfer size. So for that answer is D. Next question पे आते हैं हम. Next question is what are the basic troubleshooting techniques if the computer suddenly displays an error message, disk boot failure. So what we just have to do, we have to go to BIOS setup and check the boot order sequence if it is correct. So for that answer is A. Next is user wants to build other master boot records and also wants to make changes on drive configuration, reforms and partitions. How will he do that? So for that question answer is A, that is user will use the fix mbr command as command promote. Next question is how phases BSOD occur, due to which the system shuts down and restarts unexpectedly. How will he troubleshoot it? So for that question answer is B, that is user can troubleshoot this issue by restarting the system in safe mode or start system restore procedure. Next question for that is user faces a device failure, he will how will he troubleshoot this issue? So that answer is C, that is user has to run hardware diagnostics to identify the issue. This is very common question. Next question is which of the given components will be used to connect one computer to another computer that is present in network? So for that answer is network interface card, that we call NIC. Next is you want to deliver a message to the destination, a computer that is present in network that has multiple devices connected. Which of the given components will you use for achieving the desired? So for that answer is switch. Next is gun. On this we have done. Next is which of the given hardware components will be used to connect a local area network to an internet connection? So किस डिवाइस को हम यूज़ करते हैं लोकल एरिया नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए, इंटरनेट कनेक्शन लेने के लिए? सो फॉर दैट आंसर इज राउटर. सो वी यूज राउटर को हम यूज़ करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू इंटरनेट ओवर द टेलीफोन लाइन यूजिंग मोडेम. सो मोडेम की हेल्प से यदि हम इंटरनेट से कनेक्शन लेते हैं टेलीफोन वायर्स के थ्रू, सो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ मोडेम? मोडेम का क्या फंक्शन होता है? बेसिकली जो मोडेम का फंक्शन होता है ये क्या करता है, जो एनालॉग सिग्नल्स होते हैं उन्हें डिजिटल सिग्नल्स के अंदर, डिजिटल डेटा के अंदर ट्रांसफॉर्म करता है. दैट्स इट. दिस इज द फंक्शनिंग ऑफ मोडेम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सो बेसिकली नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इफ़ यू आर यूजिंग वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क VPN दैट वी यूज़ to connect remote users, which of the given options is correct in case of VPN? So for that question right is B. Answer is a VPN uses virtual connections routed through the internet from the third party VPN service to the remote server. Next is you wanted to connect a computer peripherals in a school. What type of network is used in this scenario? So basically basic question है, so we use LAN, local area network we use.
हमारे स्कूल के अंदर जो हम यूज़ करते हैं वो लैन हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ एक जो जियोग्राफिक एरिया है जिस सेम सिटी के अंदर, सो दैट फॉर्म्स अ लार्ज नेटवर्क बाय इंटरकनेक्टिंग लैंड्स, तो लैंड्स के ऊपर जो आता है वो मैन आता है। सो फॉर दैट आंसर वुड बी मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू वांट टू यूज़ वायरलेस कनेक्शंस टू कनेक्ट डिफरेंट कंप्यूटर्स विद इन अ बिल्डिंग। सो एक बिल्डिंग के अंदर यदि हम कनेक्ट करना चाहते हैं डिफरेंट कंप्यूटर्स को, सो विल यूज़ वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट इज़ answer for that is D, wireless local area network. Next question is which type of firewall is called pipe proxy. So हम पाइप proxy किसे कहते हैं, तो हम पाइप proxy सर्किट लेवल गेटवे को हम पाइप proxy कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश परफॉर्म पैकेट फिल्टरिंग टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ पैकेट्स इन अ नेटवर्क। आंसर इज एक्सेस कंट्रोल लिस्ट को हम यूज़ करते हैं एक नेटवर्क में पैकेट की गति को नियंत्रित करने के लिए। पैकेट फिल्टरिंग करते हैं उसे हम कहते हैं एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू वांटेड टू यूज पब्लिक की एनक्रिप्शंस फॉर एनक्रिप्टिंग योर डेटा, विच ऑफ द गिवन टेक्निक्स will you use for doing the same? So answer for that is RSA. Next question is you want to use message digest technique for ensuring data privacy and send it to another user. Which of the given options is not correct in case of this technique? So answer for that is actual data is encrypted and sent to the receiver. Next question is when every single file and folder in the system is backed up, this is called full backup. Very simple question. Next is Amazon S3 is a web-based cloud system storage service by Amazon Web Services for online backup and archiving data. What is the acronym for S3? That is simple storage service is the right answer. Next question is which RAID configuration data is mirrored in all other drives at the same time? That is that the configuration data is RAID 1. Next question is this question we have done. Next is in the 3 to 1 backup rule, what does 2 stands for? 2 stands for answer is a D, that is store data in 2 different types of storages. The next question is the specification of one of the ethernets is given below, that is 10 base hyphen tx. What does that mean number? What does that number 10 indicates? That indicates the transmission speed of the network is 10 megabytes per second. The answer is A. Next question is a transmission media for or data cable used in most of the modern Ethernet network and for telephone communication is twisted pair cables we use for that. Next question is so answer for that is B, twisted pair cables. Next question is आधुनिक इथरनेट नेटवर्क और टेलीफोन संचार के लिए उपयोग की दिस क्वेश्चन वी हैव डन. नेक्स्ट इज द BGP स्पीकिंग राउटर used for interconnections internet service providers is, so answer for that is D, inter provider border routers is. Okay, so here is the 80th second question. A dash is a packet filtering firewall which remembers information passed in the last packet and is considered secure. So answer for that is stateful firewall. Next is which of the following is a wireless medium to transmit data from sender to receiver? So we use microwaves. Again simple question. Next is sync is another name for dash an element of data communication. Again answer question. Simple question. Receiver, for that we use when a new process is being created, its state is new. Simple question. Next is the process of maintaining the information about every process in a data structure by an operating system is called process control block. This is the right answer. Next question is consider a process P0 in FCFS algorithm whose arrival time is 2 units, execution time is 6 units, servicing time is 8 units. What is the wait time? So wait time will be 6 units. Next question is calculate the waiting time for P3 during the CFS scheduling process. Order is P1, P2, P3. A burst time for P1 is 15, P2 के लिए burst time है 10 and P3 के लिए burst time है 5. So हमें waiting time बताना, तो waiting time would be 25. Next is which of the following autonomous system type has only a single connection to one another autonomous system? Answer for that is D, stub autonomous system. And the 90th and the last question is which of the following option is required in autonomous systems to exchange information, that is routing, with other autonomous systems? So answer for that is autonomous systems number. This is the right answer. So we have discussed the 90 questions जो एग्ज़ाम हमारा हुआ था 27 फैब को
मॉर्निंग सेशन के अंदर ये एग्ज़ाम था जूनियर सिस्टम इंजीनियर का. सो दिस क्वेश्चंस वी हैव डन एंड ये आंसर्स हैं इस पेपर के. ओके, सो एस्पिरेंट्स की जिन एस्पिरेंट्स की आंसर्स ठीक हैं वो उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑल द वेरी बेस्ट. चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग. विजन अकेडमी थैंक्स टू यू फॉर वॉचिंग दिस. थैंक यू.